हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके परसेप्शन में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक और कमेंट में बता सकते हो अगर कोई फीडबैक हो तो। सैम हैरिस की एक वीडियो जो कि एथीज़म के बारे में है, जिसमें वो बता रहा है कि क्या मिसकंसेप्शन है एथीज़म के बारे में लोगों को, उसको मैंने चुना है आज देखने के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, थोड़ा स्टेटस ऊपर ले जाते हैं और थोड़ा सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं। स्टेटस इन द सेंस कि लाइक एक जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा हाई लेवल का यूज़ करते हैं, एथीज़म या फिर रिलीजनिज़म या जो भी है। तो देखते हैं क्या मिसकंसेप्शन के बारे में बताते हैं। पर्सनली मैं अपने आप को काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एग्नोस्टिक काइंड ऑफ के बीच में कंसीडर करता हूँ। एथियस्ट में कंसीडर नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और एरोगेंट पोजीशन होती है। जैसा कि लुइस सी के, जो कि मेरा फेवरेट कॉमेडियन है, वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता डेफिनेटली कि गॉड नहीं है, क्या तुमने सीढ़ी के नीचे देखा था या फिर बेसमेंट में जाके चेक किया। तो उसी लिए मैं उसको फॉलो करते हुए पर्सनली ये बिलीव नहीं करता कि नहीं, गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं है। आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है होगी। और मोस्टली जो हिंदुज़म की जो स्पिरिचुअल साइड है उन सारी चीज़ों पे, जैसे कि योगा या चैंटिंग भी, इन सारी चीज़ों पे लाइक मैं यकीन करता हूँ, क्योंकि इनको साइंस के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम एक डिवाइन का पार्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे मैं लाइक कन्विंस हूँ उस चीज़ से। या बट चलो सैम हैरिस का देखते हैं कि वो क्या कहता है। दो 2007 की वीडियो। Nothing beyond human Oh life shit. and human. Now, also The world is thinking. it's also commonly imagined that atheists think there is nothing beyond human life and human understanding. The truth is that atheists are free to admit that there's much about the universe we don't understand. I mean, it is obvious we don't understand the universe. But it is even more obvious that neither the Bible nor the Quran reflects our best understanding of it. There could be life on other planets, complex life, technically accomplished civilizations. I mean, just imagine a civilization a million years old as opposed to a few thousand. Atheists are free to imagine this possibility. They're also free to admit that if such brilliant extraterrestrials exist, the Bible and the Quran are going to be even less impressive to them than they are to human atheists. It's often imagined that... अच्छा, कभी कभार ना सैम हैरिस का क्या सीन होता है कि बहुत बार ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता है कि ये एक विचारक या एक थिंकर से एक स्टैंड अप कॉमेडियन के बीच में ट्रांजिशन कर लेता है और पता भी नहीं चलता। Atheists are in principle पता closed चलता to है कि हम spiritual हंसते हैं। experience. But the truth is that there's nothing that prevents an atheist from experiencing self-transcending love, or ecstasy, or rapture, or awe. In fact, there's nothing that prevents an atheist from going into a cave for a year or a decade and practicing meditation like a proper mystic. What atheists don't tend to do is make unjustified and unjustifiable claims about the cosmos on the basis of those experiences. There's no question that disciplines like meditation and prayer can have a profound effect upon the human mind. But do the positive experiences of, say, Christian mystics over the ages suggest that Jesus is the sole savior of humanity? Not even remotely, because Christians have been having these experiences, but so have Buddhists and Muslims and even atheists. So there's a deeper reality here, and it makes a mockery of religious denominations. The fact is that whenever human beings make an honest effort to get at the truth, they reliably transcend the accidents of their birth and upbringing. Just as it would be absurd to speak about Christian physics, though the Christians invented physics. And it would be absurd to speak about Muslim algebra, though the Muslims invented algebra. It will one day be absurd to speak about Christian or Muslim ethics or spirituality.
Whatever is true about our circumstance in ethical and spiritual terms is discoverable now and can be articulated without offending all that we've come to understand about the nature of the universe. And certainly without making divisive claims about the unique sanctity of any book. मोस्टली जो उसने अभी तक कहा अग्री करता हूँ मैं भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन चाहे वो जो भी हो, जिसमें कि कुछ लोग आपको बताते हों कि कैसे करना है या फिर कोई चीज़ के बारे में बताता हो कि वो ही एकमात्र ट्रूथ है और जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है किसी भी तरीके से. मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस भी, जो कि मुझे नहीं पता कितनी है, आई गेस थोड़ी बहुत ही है, लेकिन लॉजिक भी उसको मैं लॉजिकली उसको फॉलो नहीं कर पाता. मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस उसको उसके साथ अग्री नहीं कर पाती. तो सो फार सैम जो कह रहा है उससे मैं अग्री करता हूँ. हालांकि अगेन मैं पर्सनली एथियस्ट नहीं हूँ और मुझे लगता है कि एथियस्ट इज़ जैसा कि मैंने पहले कहा कि टू श्योर. आई कैन नॉट बी दैट श्योर अबाउट something like God. So let's move on. Or pegging these most beautiful features of our lives to rumors of ancient miracles. Finally, there's this notion that atheism is responsible for the greatest crimes in the 20th century. Now, this is actually, it's quite amazing to me. This is the most frequent objection I come across, so I think I should deal with it briefly. इसमें कई लोग कम्युनिज्म को और एथिज्म को या फिर एक डिक्टेटोरियल जो सिचुएशन है उसको एथिज्म के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं और ये उसका ही एक एग्जांपल है. It is amazing how many people think that the crimes of Hitler and Pol Pot and Mao were the result of atheism. हिटलर तो एथियस्ट था भी. The truth is, this is a total misconstrual of what went on in those societies and of the psychological and social forces that allow people to follow their dear leader over the brink. I mean, the problem with fascism and communism was not that they were too critical of religion. The problem is they're too much like religions. Yes, these are utterly dogmatic systems of thought. Exactly. वो मिरर करते हैं रिलीजन को दूसरी साइड से कि भाई अगर जैसे रिलीजन कहता है कि अगर तुम हमें फॉलो नहीं कर रहे तो तुम डैम्ड हो. ये क्लेम है ना उसका, ईमानदारी से ये क्लेम है रिलीजन्स का. तो सेम यही भी है कि अगर तो तुम भाई बुर्जुआ के साथ हो और प्रोलेटारिएट के साथ नहीं दे रहे तो तुम कत्लेबल हो. मतलब तुम्हारा कत्ल कर तुम किलेबल हो, तुम्हारा कत्ल हो सकता है. I recently had a debate with Rick Warren in the pages of Newsweek, and he suggested that North Korea was a model atheist society and that any atheist with the courage of his convictions should want to move there. The truth is, North Korea is organized exactly like a faith-based cult. नॉर्थ कोरिया के लोग मानते हैं कि उनका लीडर जो है किम जोंग उन वो हगता नहीं है. ये एथिज्म लग रहा है. किस एंगल से लग रहा है एथिज्म? ये वो उसको गॉड मानते हैं. इजिप्ट में फ़ैरो को गॉड का एक इनकारनेशन मानते थे. उस लेवल का कल्ट है उधर बिल्ट हो रखा. Centered on the worship of Kim Jong-il. The North Koreans apparently believe that the shipments of food aid that they receive from us to keep them from starving to death are actually devotional offerings to Kim Jong-il. Is too little faith really the problem with North Korea? Is too much skeptical inquiry what is wrong here? Auschwitz, the Gulag, and the killing fields are not the product of atheism. They're the product of other dogmas run amok. Nationalism, political dogma. Hitler did not engineer a genocide in Europe because of atheism. In fact, Hitler doesn't even appear to have been an atheist. He regularly invoked Jesus in his speeches. But that's beside the point. He did it on the basis of other beliefs, dogmas about Jews and the purity of German blood. The history of Muslim jihad, however, does have something to do with Islam. The atrocities of September 11th did have something to do with what 19 men believed about martyrdom and paradise. The fact that we're not funding stem cell research at the federal level does have something to do with what Christians believe about conception and the human soul. It's important to focus on the specific consequences of specific ideas.
So I want to make it very clear that I am not holding religion responsible for every bad thing that a religious person has done in human history, to be balanced against all the bad things that atheists have done. I'm only holding religion responsible for what people do and will continue to do explicitly for religious reasons. आई गेस ख़त्म हो गया ये. बेसिकली बंदे का कहना ये है कि किसी भी चीज़ को ना एक डॉगमा किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारी ग्रोथ को रोकता है, हमारे मैक्सिमम पोटेंशियल को अर्न करने से हमें रोकता है, और हमें फालतू की चीज़ों में उलझा के इधर उधर के कामों में लगा देता है, जो कि एंड ऑफ द डे डिस्ट्रक्टिव बनते हैं इसके मुकाबले कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकें. इसके अलावा वो ये भी कह रहा है कि जो प्रे या मेडिटेशन है, इनके थ्रू जो एक लाइक बहुत ही अच्छे माइंडसेट को अचीव किया जा सकता है, एक बहुत ही अच्छे लाइक लेवल को मेंटली अचीव किया जा सकता है, वो किसी भी पर्टिकुलर गॉड में बिलीव किए, किसी भी रिलीजन में बिलीव किए बगैर भी वो स्टेटस अचीव किया जा सकता है. बहुत शॉर्ट वीडियो थी, बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे बात करने को, लेकिन सो फार मुझे इतना समझ में आया. और मैं मोस्टली सारी चीज़ों से अग्री करता हूँ. जो मेरा एक मोस्ट डिसएग्रीमेंट है उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं की सैम ने, तो मिस्टर हैरिस ने. मेरे मामा का लड़का नहीं है तो ऐसे नहीं बोलूँगा. एनीवेज आज के लिए इतना ही. थैंक यू.